First one, that is oxidoreductases. The enzyme which catalyze the oxidation and reduction of molecular khulutiabat. The enzyme which catalyze the reaction in which oxidation and reduction takes place. Oxidoreductases. The second one, that is transferases. Transferases mean the enzyme which catalyze the transfer of a certain group, that's amino group, carboxylic group या phosphate group, एक मॉलिक्यूल से दूसरे के मॉलिक्यूल की तरफ. Transferases. The third one, that is hydrolases. Hydrolases, in which the hydrolysis takes place. The water molecule add up chemically and separating the substance into two one. Isomerases, in which the enzyme catalyze the formation of another isomer. Formation of another isomer. Number 4, lysases. Number 4 is lyases. Where isomerases? Lyases, that is the lysis, separating of the substrate into two components without addition of water molecule. Hydrolases में तो ये है water molecule add up होता है and the substance split into two substances. Whereas in case of lyases, no addition of water molecule. Without addition of water molecule, the substance split up into two components in the presence of enzyme. Sixth one, that is ligases. Ligation mean गांठ लगाना. Two simple molecules, they combine together to form a bigger molecule. Synthesis. Two simple molecules, they combine together to form a bigger molecule. इस किस्म के एंजाइम को ligases कहते हैं. Now in detail, first of course the oxidoreductases, chemical reaction है सारे. Ascorbic acid जिसे कहते हैं विटामिन सी. इसमें सारे जो है एंजाइमिक रिएक्शन में सारे केमिकल है, मोस्ट ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह. ascorbic acid, in the presence of oxygen, 1/2 oxygen atom, water molecule is out. These two hydrogen atoms, they are eliminated in the form of water, and you get this molecule, dehydroascorbic acid. Dehydroascorbic acid. Ascorbic acid. The enzyme here, that is the ascorbic acid oxidase. मैं सिर्फ ऑक्सीडेज लिखूंगा, बाकी आप खुद लिख लें. ascorbic acid oxidase
Have we studied the nomenclature of enzyme? Nomenclature of enzyme नहीं पढ़ा? नॉमेनक्लेचर में ये है कि एंजाइम का नाम किस तरह दिया जाता है. हाउ टू नेम द एंजाइम. नॉमेनक्लेचर उसमें ये है, देयर आर 3 स्टेप्स. किसी ज़माने में एंजाइम का नाम जो था ऐसे ही दे दिया था, उन्हें ट्राइवियल बेसिस, जो मर्जी नाम लिख देते थे. उसने पेप्सिन लिख दिया. अब पता नहीं पेप्सिन कहाँ से आया और किस पे अमल करता है. नथिंग, कोई इसमें नहीं के, कोई बैकग्राउंड नहीं है. इसी तरह ट्रिप्सन, ट्राइवियल बेसिस. ट्राइवियल में ऐसे ही जो मर्जी रख दें एंजाइम का नाम. फिर कुछ साइंसदानों को समझ आई, उन्होंने फिर देन दे डिसाइडेड टू नेम द एंजाइम अकॉर्डिंग टू द सबस्टेट वेयर फ्रॉम इट इज डिराइव्ड. जहाँ से एंजाइम डिराइव किया गया उसके नाम पे उन्होंने नाम रखा. मसलन पैपेन. दिस एंजाइम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपिया. पपिया, पिपिया क्या है? पपीता कहते हैं. उसमें से जो एंजाइम उन्होंने डिराइव किया, दैट्स अ कैटालाइटिक एंजाइम, प्रोटीलाइटिक एंजाइम. पेन रखा, बड़ा महंगा है वैसे. कभी इस्तेमाल करें आप कीमे के साथ मिक्स करके, कभी कबाब बनाए, वो देखें कितने मज़ेदार होते हैं. The other is a fusin. Another enzyme, fusin, that's obtained from fig. अंजीर में असर किया. अंजीर से जो एंजाइम हासिल किया उन्होंने, उसका नाम फ्यूसिन रखा. लेकिन at present the name of enzyme that is depends upon 3 factors. In the first one, you name the substrate. पहले substrate का नाम लिखें. Second, type of reaction, chemical. Type of chemical reaction. Oxidation हो रही है, reduction हो रही है, hydrolysis हो रही है, क्या हो रहा है. Third one, addition of ASE at the end. Addition of ASE at the end. तो इस तरह name of the enzyme is of course proposed. मसलन यहाँ ये है कि ascorbic acid is the substrate. ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, राइट. तो एस्कॉर्बिक ऑक्सीडेज इज द एंजाइम. एस्कॉर्बिक ऑक्सीडेज एंजाइम. प्रोडक्ट क्या बन रहा है? डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड. तो एंजाइम का जो नाम है, नॉमेनक्लेचर, दैट डिपेंड्स अपॉन दीज 3 फैक्टर्स. नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, and addition of at the end ASE, ascorbic oxidase. Another one that is glucose. Glucose get oxidized in the presence of oxygen to form gluconic acid. The glucose. इसमें भी 1/2 ऑक्सीजन एटम शामिल कर दें तो क्या होगा? The aldehyde group will be changed into carboxyl group. Aldehyde containing substance, whenever it is exposed to oxygen, changes into
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये एल्डिहाइड जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब्दील हो जाएगा। बाकी द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन एज सच, कोई तब्दीली नहीं होती। This is gluconic acid. एसिड बन गया एल्डिहाइड से। एंजाइम विल बी बनाए ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम। Then there are certain dehydrogenases in which the hydrogen has been removed, oxidation type. Lactic acid, lactic acid, NADs come along, that is the coenzyme which changes into NADH2, causes oxidation of it, removal of it, hydrogen, dehydrogen or rehydrogen, दोनों के। And of course you get what? Pyruvic acid. Pyruvic acid. Now the enzyme here, that is what? Lactic dehydrogenase. Hydrogen has been moved, dehydrogenation. So dehydrogenase. Dehydrogenase will be the enzyme. पूरा ये होगा lactic dehydrogenase. Removal of hydrogen. हाँ, ये भी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। केमिकली हम ऐसे ही करते हैं ना, डिहाइड्रोजनेज। इसी तरह another one, that is succinic acid. Succinic acid, in the presence of NAD, changes into NADH2. Two hydrogen atoms, one from here, one from here, resulting into fumaric acid. तो fumaric acid को ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CH3OH twice CH3OH twice fumaric acid. इसमें भी देखें, the hydrogen has been taken away by NAD, succinic acid, changes into fumaric acid. The enzyme will be succinic dehydrogenase. Succinic dehydrogenase. Then peroxidases. Within this oxidoreductases, peroxidases, इनमें आपने एग्जाम्पल पढ़ी होगी, वो H2O2 green peroxide changes into water plus oxygen. Two of this.
The enzyme which catalyzes this reaction course reversible है. That is दो किस्म की enzyme है. One is known as catalase, the other is known as peroxidase. Catalase is present in animals, peroxidase is present in plants. Hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide changes into water and oxygen. Enzyme दो किस्म के, catalase which is present in animal and peroxidase that is present in plants. Oxygenases. The example is that is the phenylalanine amino acid, one of the amino acid, changes into tyrosine. और देखें इसमें there are oxidation causing substance and reducing substances. NADPH2 plus oxygen and changes into this one, tyrosine. Addition of OH here. एंजाइम को नाम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेज. Phenylalanine, HENYL, alanine, changes into tyrosine in the presence of NADPH2. One is reducing one, other is oxygen, both causing what? OH group here. Oxygenases. Reductases, very important. And try to understand it. It's a bit complicated. There is a hormone which is known as glutathione. It is composed of glutamic acid, cysteine, and of course glycine, GLY. Three amino acid. Attend to me. Three amino acid. They combine together to form a hormone which is known as what? Glutathione. But the glutathione here is in the oxidized form. इसमें सिस्टीन में SH ग्रुप होता है, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ इट, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, देन ऑफ कोर्स ग्लाइसिन. तो ये ऐसे, दिस इज डाइमर ऑफ glutathione. And it is the oxidized form. This in the presence of NADPH2. Which of course reduce it into NADP.
and it is changed into molecule of glutathione. SH का बहाल हो जाता है। यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड है सिस्टीन के सामने, और सिस्टीन का फार्मूला पता है ना, इसमें SH ग्रुप होता है, सिस्टीन अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग। तो जो सब सामने आ जाए तो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज डाइमर ऑफ ग्लूटाथियोन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। NADPH2 is there, which produce, of course, which give hydrogen. Thereby, this bond is broken and is changed into SH. This is now reduced form of the glutathione. Reduced form of glutathione. इसका बड़ा जबरदस्त रोल है, इसका रोल बड़ा जबरदस्त है। It protects the RBCs from oxidation. It protects the RBCs from oxidation. रेड ब्लड सेल को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। इस तरह मेटाबॉलिक रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है खासा होता है और ये ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन जो है विच इज ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल टू काज ऑक्सीडेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। But this molecule, which is supported by the NADPH2, which of course reduce it, इसकी हाइड्रोजन जो है, this hydrogen, that is utilized, इस ऑक्सीजन को लेके change into water molecule. It changes into water. So this is how it protects the RBCs from oxidation. Enzyme here, that is glutathione reductase. Enzyme is, that is glutathione reductase. तो ये हो गए सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। Then come transferases. Second one, transferases. The enzyme which catalyze the transfer of certain group from one molecule to another one. Transfer करता है. Very important one. Transaminase. ट्रांसएमिनेजेस चलें, ट्रांसएमिनेजेस, इसमें ग्लूटामिक एसिड का बड़ा रोल है। ग्लूटामिक एसिड कुरकुर दी आवाज नहीं बंद होती। ग्लूटामिक एसिड प्रोवाइड द अमाइनो ग्रुप टू द कीटो एसिड ऑफ अनदर सब्सटेंस सच एज पायरुविक एसिड। Pyruvic acid, glutamic acid, it of course give amino group to pyruvic acid to form what? The amino acid. Alpha ketoglutarate acid, itself the glutamic acid changes into alpha ketoglutarate acid. Plus alanine. Plus alanine. Glutamic acid
Glutamic acid provides the amino group to convert the pyruvic acid into alanine. Alanine is amino acid. ये जो है ये कीटो एसिड है एलानीन का. इट सेल्फ इज चेंज इनटू कीटो एसिड. जब अमाइनो ग्रुप दे बैठा है ये कीटो एसिड बन देता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. Alanine is formed. And the name of the enzyme is that is GPT. Glutamic pyruvic transaminase. Glutamic pyruvic transaminase. इसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है. It has a diagnostic value. It is present in liver. ये एंजाइम जो है ये लिवर में मौजूद होता है खासा. इन केस द लिवर सेल दे आर ब्रोकन. लिवर सेल जब टूटते फूटते हैं ड्यूरिंग सर्टेन डिजीज, दिस एंजाइम इज रिलीज्ड and enter into the blood. The blood level of GPT increases as compared to the normal value of GPT, and that will confirm what? That the person is suffering from liver disease. Diagnostic value is new name has been given, that is ALT. GPT. देखो ना गल GPT. Glutamic pyruvic transaminase. ALT mean alanine transaminase. A new name has been given. इसी एंजाइम के लिए ये नया नाम दिया गया ALT. इसी तरह another reaction in which the glutamic acid give the amino group to oxaloacetic acid. वही अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लस अस्पार्टिक एसिड. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लस अस्पार्टिक एसिड. इसमें द नेम ऑफ एंजाइम हियर दैट इज GOT. न्यू नेम इज दैट इज AST. इसकी भी बड़ा डायग्नोस्टिक वैल्यू है. दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन हर्ट सेल्स. हर्ट सेल्स में खासा मौजूद होता है. इन केस द हर्ट सेल्स दे आर ब्रोकन डाउन, particularly in a certain disease, this enzyme is released and enter into the blood. The blood level of GOT will increase as compared to normal. That will confirm that the person is suffering from heart disease, heart, दिल की बीमारी. दिल की बीमारी में ये एंजाइम की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है. उससे पता चलता है कि आदमी जो है दैट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज. ट्रांसएमिनेजेस. Phosphotransferases. Phosphotransferases, the enzyme which of course involvement of the transfer of phosphate group from one molecule to another one. Simple glucose in the presence of ATP, ADP, glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate. एंजाइम जो है यहाँ दो किस्म के हैं. There are two types of enzyme. One is known as hexokinase.
हेक्सोकाइनेज, काइनेज जहाँ भी आए तो दैट मीन ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट. Yeah, there is glucokinase. Glucokinase is present in liver. It is present in liver. Glucokinase is present in liver. Hexokinase is present in muscles. Hexokinase is present in muscles. ग्लाइकोजन, जिसे आप यहाँ ग्लूकोज की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंटाइम. That means 9,000 glucose molecules then linked together to form glycogen. First, of course, it releases one glucose molecule. वो रहता glycogen ही है, but in the form of this N-1 plus glucose. One molecule that separates another enzyme that is known as debranching enzyme. Debranching enzyme यानी ऐसा एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन के ब्रांच में से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेपरेट कर देता है. Then this combined with that of phosphoric acid to form glucose 1 phosphate. To form glucose 1 phosphate. And the enzyme here, that is phosphorylase. Phosphorylase. Phosphorylase is the enzyme which converts the glucose into glucose 1 phosphate, and that glucose comes from glycogen. That comes from glycogen. Phosphorylase. Huh? Debranching enzyme. Transmethylases. Transfer of methyl group. The enzyme which catalyzes the transfer of methyl group from one molecule to another one. Transmethylase. This substance, which is known as noradrenaline, which is known as noradrenaline. It changes into adrenaline in the presence of methionine. Changes to adrenaline. Noradrenaline in the presence of methionine changes into adrenaline, and such changes into homocysteine. The enzyme here that will be what?
noradrenaline transmethylase. Noradrenaline transmethylase. So these were the phosphorotransferases. In एक और enzyme है, that is in case of the benzoyl SCOA changes into uric acid. बाद में करेंगे, चलें.